Next, we are going to talk about exceptions to the law of demand. Okay, those few things which don't follow law of demand. Let's see. Giffen goods. Now, what is this giffen goods? These are special category of inferior goods in which demand for a commodity falls with a fall in its price. So, basically, let's say maize and jowar. Let's say maize and jowar. Now these commodity are found to be cheaper than other commodity. So what we do is that we buy that. So when my income is less, okay, so I was buying these goods. But as per the increase in my price, we know as per the law of demand, if the price increases, if our income increases, then our demand should also increase. But for this particular commodity, my demand starts to decrease because I am getting that same thing, same amount in lesser price. I will demand it lesser and save money to buy some luxurious food just like rice. ओके सो दैट मीन्स व्हाट कि मुझे मेज और जो ज्वार है वो हम खरीद रहे तो जैसे ही मेरे इनकम रेज होता है तो मैं क्या करूंगी मैं उसको पैसे उसका डिमांड कम करके उसको थोड़ा और कम खरीद के मैं क्या करूंगी मैं दूसरे सुपीरियर गुड्स की तरफ जो लग्जरियस गुड है जो महंगा है जो मैं पहले अफोर्ड नहीं कर पा रही थी मैं वो लूंगी इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है राइस और व्हीट सो दिस इज कॉल्ड गिवन गुड्स. Next is articles of snob appeal. Now we have the people have the tendency to consume those things which we find it that yeah if I consume this I will look like I have high status. ठीक है अपने पोजीशन को दिखाने के लिए हम कुछ चीजें कॉपी करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट शो ऑफ करने की कोशिश में हम उस चीज को डिमांड करते हैं क्लियर सो लेट्स से if the diamond price rises, the demand of this commodity will increase. People will run to buy it to show people that see I am of high status. I can afford it. But as per there is a fall in the price, people there were few people who couldn't afford it before, so they also started buying. वो लोग भी खरीदने लगे प्राइस डिक्रीज होने पर तो इससे क्या है जो लोग डिमांड कर रहे थे पहले ज्यादा वो कम हो गया डिमांड फॉर द डायमंड रिड्यूस्ड. So this is what you call as articles of snob appeal. Next is emergency. In times of emergency जैसे फ्लड बाढ़ आया famine और war फाइटिंग हुआ ठीक है तो household do not behave in a normal way and consequently law of demand may not operate. If shortage is feared in application of war, people may start buying for breeding stock or for hoarding even when the price rises. So जब फाइटिंग वगैरह होता है तो कैपिटल का बहुत लॉस होता है पैसे का बहुत लॉस होता है तो लॉस होने से क्या है पैसा डिक्रीज होने से क्या है हमें पता है डिमांड डिक्रीज होता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन what will happen the demand for the commodity will increase even if the income is less or the real income is less. So this happens during emergency only. People will run for buying stocks or for holding. Okay. So this was for emergency. Moving ahead, next is shift in demand curve or change in demand. So it will be just opposite to the movement along the demand curve. So if demand changes due to change in factors other than price, it is known as shift in demand curve. So here we are going to assume that price of that considered commodity is constant, but the other factors which can affect demand is not constant. It is changing. मतलब बाकी factors को छोड़कर सिर्फ price को ही constant हम assume करेंगे. Okay. So there are of course two types, increase in demand and decrease in demand. Now increase in demand happens means that consumer now demand more at a given price of a commodity. जितना प्राइस है अभी प्राइस कांस्टेंट है जितना प्राइस है अभी हम उसमें ज्यादा डिमांड अगर करें ठीक है तो वो होगा इंक्रीज इन डिमांड और ये कब होता है जब हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है दीज आर द फैक्टर्स इनकम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्सपेक्टेशन complementary goods price population so these are the factors which can affect in demand which we have considered earlier as constant except the price. Okay, now we are going to consider these two change and price to be constant. So if my income increases income increase हो रहा है तो क्या होगा मेरा डिमांड बढ़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस राइज हो रहा है तो मैं
क्या करूंगी, अगर कॉफी का प्राइस राइज हो रहा है तो मेरा टी का डिमांड राइज हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऑफ दिस कोमोडिटी, कोई पर्टिकुलर चीज का दाम बढ़ जाएगा, तो मैं उसको अभी डिमांड करूंगी ज्यादा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल करा है, लाइक फाउंटेन पेन एंड इंक। इफ फाउंटेन पेन price decreases, demand for the ink will increase. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। हर जो भी इधर रहता है इस दुनिया में, सबका डिमांड होता है, छोटा बड़ा सबका डिमांड होता है। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो मेरा डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। ऑफ कोर्स ऑब्वियस वन, just the opposite. A decrease in demand means the consumer now demand less at a given price of a commodity. Price being constant, उस प्राइस में, वो प्राइस कॉन्सेप्ट चेंज हुआ पर उसी वो प्राइस रहते हुए भी मेरे डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, तो हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि इनकम डिक्रीज हो गया तो ऑफकोर्स मैं कॉमोडिटी का डिमांड कम कर दूंगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज कर गया तो मैं, जैसे कॉफी और टी था, तो कॉफी का प्राइस रेज होने से मैंने टी लिया। अब कॉफी का प्राइस ही अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मैं टी से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि प्राइस डिक्रीज होगा, कम होगा, तो मैं अभी डिमांड नहीं करूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस राइज हो जाता है। फाउंटेन पेन का अगर प्राइस राइज हो जाएगा तो उसके साथ जो यूज होता है इंक, तो उसका डिमांड लेस हो जाएगा एंड पॉपुलेशन डिक्रीज होने से ऑफकोर्स डिमांड डिक्रीज होगा। So let's understand this using this graph. So as per we are considering other factors to change except the price, so there will be no longer any movement along the demand curve, no upward movement or downward movement. Whole demand curve is going to change, going to shift. Okay, so let's consider here quantity, and this is the price. So let's consider the price of coffee. Okay. Okay. So previously my demand was this, so let me give it a name, say Q long. This is P long. Okay. So let's say the coffee price decreased, falls. So what will happen? People who used to drink coffee will also shift to tea. Okay, because it's a perfect substitute. Okay, both will prevent you from sleeping. You can use it while studying at night. Okay, so what will happen? People will shift to that. Price being constant, the quantity demand decreases. So it is going to move inward. It is going to move inward, that is left. Left, it will shift leftward. Okay. Again, the price being constant, let's say the price of tea increase. So people who used to drink tea will now move to what? It will move to coffee. Okay, since the price increased. Okay, so the what will happen? Price being remaining the constant, price of the coffee remaining constant, the demand increases. Okay, previously it was this, now it increased to this. So there is outward shift of the demand curve. That is, demand curve increases. So outward shift, that is, it is moving, it is shifting rightward. And over here demand is moving inward, that is left side. Okay, I hope so the example is clear to you.